Hello, good evening to all. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Today we are going to start a new topic, that is from pharmacology. Good evening to all. I hope I am audible to you. If I am audible, please write yes in the comment box so that I can understand. If I am audible to you, please write yes in the comment box so that I can start. Right? If I am audible to you, please write yes in the comment box. So today we are going to see a new chapter from pharmacology, and that is nothing but we are going to start our drug acting on CNS. So we have we have seen our nervous system, we have seen anatomy physiology point of view, nervous system from HAP point of view, we have seen that. Now we will start a general consideration for the drug acting on CNS. So drug acting on CNS, in our today's lecture we will see that, and if possible we will start the general anesthetics also. After that we will see sedative hypnotics drugs, after that we will see alcohol, and after that we will see anti-convulsant drugs, antipsychotic drugs, mood elevators, antidepressants, etc., etc. So once you understand your nervous system from HAP point of view, so you become ready for adaptation of your drug acting on CNS. Suppose you have understood each and every single thing about the nervous system, you can easily understand the drug acting on CNS. And okay, drug acting on CNS, there are 8 chapters in the drug acting on CNS. आपका नर्वस सिस्टम हो चुका है HAP पॉइंट ऑफ व्यू से. नर्वस सिस्टम में अपन ने देखा है कि पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, प्राइमरी एक्साइटेशन ऑफ न्यूरॉन्स, हाउ देयर इज एक्साइटेशन ऑफ न्यूरॉन, एंड हाउ देयर इज अ transmission of nerve impulse across the neuron, and in the details that those things will help you to understand the drug acting on CNS. So today we will start pharmacology of drug acting on CNS. So in that also we will try to understand the general consideration for the drug acting on CNS. So drug acting on central nervous system. So in this you are going to have 7 to 8 chapters. Drug acting on a central nervous system, right? So, drug acting on CNS. So you have the nervous system can be altered, the central nervous system or the physiology of CNS can be altered to achieve a different therapeutic purpose, है ना. आप मॉडिफाई कर सकते हो CNS का फंक्शन, आप मॉडिफाई कर सकते हो. क्यों मॉडिफाई करना है भाई? फंक्शन अच्छा नहीं चल रहा है क्या? सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट सपोज यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिसीज, सपोज यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी disorder, so in that case it is a desire to alter the physiology of CNS, and drug which alters the physiology or drugs which affect the CNS known as a drug acting on CNS. So in that category you are going to have different chapters like narcotic analgesics also known as a opioidal analgesics और सेंट्रली एक्टिंग एनालिसिक्स. इसको ही अपन बोलते हैं ओपाइडल एनालिसिक्स, इसको ही अपन बोलते हैं नार्कोटिक एनालिसिक्स, इसको ही अपन बोलते हैं सेंट्रल एनालिसिक ड्रग्स.
So morphine, codeine, and all that category, that is a separate chapter. So narcotic analgesic is one chapter. Then antipsychotic, okay, sorry, then anxiolytics, drug drugs used in the treatment of anxiety, anxiolytics. Then sedative hypnotics. So anxiolytics anxiolytics, sedative hypnotics, narcotic analgesics. Then you have another chapter known as a anticonvulsants. Anticonvulsants means anti-epileptic drugs. So, anti-epileptic drugs. Then you have general anesthetics, you have antipsychotics. So these are the different chapters which covers under the section drug acting on CNS, narcotic analgesics or opioidal analgesics or central analgesics. Then anxiolytics, sedative hypnotics, okay, or drug used in the treatment of insomnia, sedative hypnotics. Then anticonvulsant or anti-epileptic drug or anti-seizure drug. Then fourth chapter is nothing but the general anesthetics, so used in the treatment of, okay, so general anesthetics, they are used for the surgery, before surgery, to decrease the pain and consciousness, okay, general anesthetics. Then antipsychotics, drug used in the treatment of psychiatric disorders like mania, hypomania, schizophrenia, and bipolar disorders. So narcotic analgesics, anxiolytics, sedative hypnotics, anticonvulsants, general anesthetic, antipsychotics. Then alcohol आता है आपका. Then drug used in the Alzheimer's and drug used in the Parkinson disease. So these are also coming under the drug acting on CNS. Then alcohol is there, CNS stimulants are there, CNS stimulants, local anesthetics, and lastly alcohols. So these are the chapters we are going to discuss in upcoming sessions. These chapters are covered under the pharmacology of drug acting on CNS. So CNS pharmacology, in that you are going to have these chapters, and we are going to see all the details regarding this, right? Before that, you should understand some physiological points which are already covered in the anatomy physiology, which we have already covered in the anatomy physiology. अपन ने HAP में देखा है कि हाउ देयर इज एक्साइटेशन ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन कैसे एक्साइट, न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन इज नथिंग बट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. न्यूरॉन्स और नर्व सेल is nothing but the structure and functional unit of your nervous system, right? Now excitability of neuron, now it depends on the movement of ion across the neuronal membrane. तो न्यूरॉन का एक्साइटेशन और न्यूरॉन का इम्पल्स जनरेशन, इम्पल्स कंडक्शन कैसे होता है. तो एक्साइटेबिलिटी और जनरेशन ऑफ इम्पल्स और कंडक्शन ऑफ इम्पल्स डिपेंड्स ऑन द फ्लक्स ऑफ आयन. फ्लक्स मतलब इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द न्यूरनल मेम्ब्रेन. नर्व मेम्ब्रेन जो होता है उसके अक्रॉस, मतलब एक साइड से दूसरी साइड में जाना. सो द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द न्यूरनल मेम्ब्रेन, that is the basis of neuronal excitability. Okay, so for example, if you know that we have already seen that this is, say for example, this is your nerve cell. The inside potential is negative, and if there is a movement of cation inside the cell, अगर सोडियम अंदर जाता है, movement of cation inside the cell, so causes the depolarization. So suppose there is a influx or entry of sodium ions. Sodium ion is a positive in nature, इसके ऊपर positive charge होता है. You know that in the neuronal cell you have negative charge, and negative charge होता है सेल के अंदर. Suppose if sodium enters in the cell or potassium leaves the cell. You know that potassium is an intracellular cation, sodium is a extracellular cation, calcium is a extracellular cation, chloride is a extracellular anion. तो क्लोराइड एनायन होता है, सोडियम कैटायन होता है, पोटेशियम कैटायन होता है, कैल्शियम भी कैटायन होता है. कैल्शियम, सोडियम एंड क्लोराइड, दे आर नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस, एंड सोडियम एंड पोटेशियम इज नोन एज इंटरसेलुलर. सो डीपोलराइजेशन कब होगा? व्हेन देयर इज एंट्री ऑफ सोडियम फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड सेल, और इफ देयर इज एग्जिट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम, or if there is a exit of potassium from the cell, that leads to stimulation or excitation. Why? Because of the depolarization. Depolarization होगा, क्या होगा? Depolarization. When there is entry of sodium or exit of potassium from the cell, so entry of sodium in the cell or entry of calcium in the cell and exit of potassium from the cell, that leads to depolarization. So disturbance in the
disturbance in the intracellular negativity that leads to stimulation or either excitation or generation of impulse or conduction of impulse. तो सोडियम अंदर गया, स्टिमुलस स्टार्ट हो जाएगा, या फिर इंपल्स जनरेट हो जाएगा, या फिर इंपल्स कंडक्ट हो जाएगा, राइट. पोटेशियम एग्जिट हो गया, इंपल्स स्टार्ट हो जाएगा. कैल्शियम अंदर गया, इंपल्स स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. क्लोराइड अंदर गया, अगर क्लोराइड अंदर गया तो अंदर का नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ता है, एंड दैट्स व्हाई that leads to hyperpolarization. Suppose if chloride is a negative ion, if chloride influx is there or potassium influx is there, क्लोराइड अंदर गया सेल के या फिर पोटेशियम सेल के बाहर आया है ना, that leads to inhibition or depression because of the hyperpolarization of post-synaptic membrane. Hyperpolarization, और ये दो कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, राइट, है ना. एक सेल है न्यूरोनल सेल. So if there is a entry of positive ion, sodium or calcium, that leads to depolarization, and if there is exit of potassium, that leads to depolarization. If there is entry of negative ion, chloride, or exit of potassium, that leads to hyperpolarization. Remember, depolarization results in the stimulation effect or excitation effect or generation of impulse or conduction of impulse. Okay, hyperpolarization result in the inhibition or depression effect or stoppage of impulse formation or suppression of impulse conduction. Okay, ये entry exit important है. ठीक है. Now different type of ion channels which are present in the neuronal cell membrane. Neuronal cell membrane के ऊपर different ion channels होते हैं. Different ion channels which are present on the neuronal cell membrane. So first one is known as the voltage gated or voltage regulated ion channels. Voltage gated or voltage regulated ion channels. So changes in the membrane potential, है ना, changes in the membrane potential that is regulated by ion movement of ions. Voltage gated ion channels मतलब वोल्टेज सेल के अंदर कम हो गया तो ज्यादा हो गया तो आयन चैनल ओपन या क्लोज हो जाएगा. सो इफ देयर इज अ चेंजेस इन द इंट्रासेलुलर नेगेटिविटी, सो दैट स्टिमुलेट टू ओपन और क्लोज द different ion channels. Okay, so axonal entry of sodium, है ना. So if there is an entry of sodium inside the cell, so that leads to depolarization and propagation of impulse. Presynaptic कैल्शियम अगर है, प्रीसाइनेप्टिक कैल्शियम है ना. प्रीसाइनेप्टिक मतलब साइनेप्स से पहले जो प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन है उसमें कैल्शियम क्या करता है, इंपल्स जैसे आता है तो कैल्शियम जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, सो इन द प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन एज इंपल्स coming from the stimulus is coming, so in the axonal membrane of your presynaptic neuron, so calcium release is there. Calcium will bring about the exocytosis of neurotransmitter from the synaptic vesicle. तो जैसे ही इंपल्स आता है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, कौन करता है, कैल्शियम करता है. okay, that calcium will act on calcium will act on a synaptic vesicle. There is a release of neurotransmitter, और वो neurotransmitter that will released in the synapse, some part will act on its post synaptic receptor. So that may be either ion channel, that may be either GPCR, that may be either different type of receptors we have already seen, right. So ion channels are of two type. Ion channels may be voltage gated ion channel, or ion channel may be transmitter or receptor type, transmitter or receptor gated ion channels. Now these ion channels are regulated by neurotransmitter. ये neurotransmitter regulated ion channels होते हैं. Neurotransmitter interact with these respective receptor linked ion channels. They work via secondary messenger. Secondary messenger क्या होते हैं अपन ने देखा है already in the general pharmacology. So how there is excitation of neuron? So upon the entry of cation, either there is entry of sodium inside the cell, which leads to disturbance in the potential of inside cell, and that leads to depolarization and stimulation or excitation or generation of impulse or conduction of impulse. If there is a exit of potassium, again same thing happens. If there is a entry of if there is a entry of chloride inside the cell, so that increases the intracellular negativity, that leads to hyperpolarization and inhibitory effect, right. Now we'll see the next point. You can see over here,
वोल्टेज गेटेड आयन चैनल कैसे एक्ट होता है? वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, राइट. So this one is a external, or you can say outside the cell, and this one is a inside the cell. ये क्या है? inside the cell. ये inside cell. So inside cell there is a negative potential. Inside cell there is a negative potential, means there is a minus and minus 90 millivolt. So if there is a entry of sodium, so what will happen? Inside cell potential will become a positive, है ना. अगर सोडियम अंदर जाता है, सोडियम क्या है? Na plus क्या है? So it is a cation. So inside cell is a negativity. Sodium अंदर गया तो depolarization होगा. So sodium enters via ion channel when there is a reach of threshold potential, है ना. इंट्रासेलुलर नेगेटिविटी मान लीजिए -90 है, तब तक रेस्टिंग है सर. जैसे इंट्रासेलुलर नेगेटिविटी कम हो जाता है -55, सपोज इंट्रासेलुलर नेगेटिविटी इज -55 बिकॉज ऑफ द लीकेज ऑफ पोटेशियम आयन. पोटेशियम आयन इनसाइड होता है, तो इफ देयर इज अ लीकेज ऑफ पोटेशियम आयन इनसाइड द सेल, इनसाइड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, व्हाट हैपन इनसाइड, एंड इफ देयर इज एंट्री ऑफ पोटेशियम इनसाइड द सेल, so what will happen? Intracellular negativity will decrease from 90 to 55, and as there is decrease to 55, suddenly sodium channels will open, sodium will go inside, and there is a depolarization. So voltage gated ion channel कैसे वर्क होता है कि डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज. सेल का अंदर का नेगेटिविटी कितना है? अगर नेगेटिविटी है -90 तो वो तो रेस्टिंग में है, सेल रेस्टिंग में है, देयर इज नो एक्साइटेशन. बट वो सेलुलर नेगेटिविटी है ना बढ़ गया, मतलब सेलुलर नेगेटिविटी कम हो गया और पॉजिटिविटी बढ़ गया. कैसे? बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ एंट्री ऑफ सोडियम, लॉट ऑफ एंट्री ऑफ पोटेशियम अगर ज्यादा आ गया सेल के अंदर तो क्या होगा? इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी बढ़ेगा, -90 से -60, -50, -55 हो गया तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, दैट इज अ थ्रेशोल्ड पोटेंशियल. तो इमीडिएटली सोडियम चैनल ओपन होगा, सोडियम विल गो इनसाइड सेल, देयर इज अ डीपोलराइजेशन एंड excitation, right? So voltage gated ion channels, sodium in the external membrane of okay, then calcium channels in the presynaptic membrane. Now these are the targets for drugs. So these channels are blocked by most of the anticonvulsant and anesthetic drugs. Sodium ion channel is blocked by anesthetics and anticonvulsant. Anticonvulsant मतलब क्या? It is also known as anti-epileptic drug or anti-seizure drug, है ना. Then again second is the neurotransmitter regulated ion channels. तो ओके, तो न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेटरी आयन चैनल्स देखो यहाँ पे, है ना, रिसेप्टर के न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेटेड आयन चैनल्स. तो दिस इज न्यूरोनल मेम्ब्रेन, सो इट इज अ इनसाइड सेल, इट इज आउटसाइड सेल, ये आउटसाइड है. तो न्यूरोट्रांसमीटर यू हैव रिसेप्टर ऑन द सेल, है ना, जैसे अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर या फिर गाबा रिसेप्टर, है ना. सो ऑन द न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन you have receptors for particular neurotransmitter. A particular neurotransmitter will be released from presynaptic neuron. That neurotransmitter will combine with its respective receptor on the postsynaptic membrane, and then ion channel will be regulated. Then ion channel will be, मतलब यहाँ पे direct ion channel regulate नहीं होता है. So ion channel is regulated by neurotransmitter. Like for example, GABA is there, glutamate is there, glycine is there, acetylcholine. So these are also targets for few anesthetic drug, anticonvulsant drugs, sedative hypnotic drugs and cholinergic drugs. मतलब क्या कि दो टाइप के आयन चैनल्स मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं. एक तो होता है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल और दूसरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेटेड आयन चैनल. वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स मतलब क्या? दैट डिपेंड्स और दैट ओपन्स और क्लोजेस डिपेंडिंग अपॉन द इंट्रासेलुलर नेगेटिविटी. इंट्रासेलुलर नेगेटिविटी -90 है तो चैनल क्लोज रहेगा. तो वही इंट्रासेलुलर नेगेटिविटी अराउंड 55 आ गया, चैनल ओपन होगा, सडनली सोडियम अंदर जाएगा, कॉज डीपोलराइजेशन करेगा. दैट इज ब्लॉक्ड बाय एनेस्थेटिक एंड एंटीकन्वल्सेंट ड्रग्स. ओके, देन सेकंड होता है न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेटेड आयन चैनल्स. तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, वो न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर होगा आयन चैनल के ऊपर, वो वहाँ पे रिसेप्टर के ऊपर एक्ट होगा और सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेगा, एंड वो सेकेंडरी मैसेंजर फिर आयन चैनल ओपन करेगा, राइट. So regulated by neurotransmitter like GABA, that is a gamma aminobutyric acid, not a BABA. GABA क्या है? It is inhibitory neurotransmitter. Then glutamate is there, glycine is there, acetylcholine, and a lot of neurotransmitters are there. We'll see details. These are also targets for anesthetic drugs, anticonvulsant drugs,
सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स एंड कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। अगेन न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेटेड आयन चैनल विच आर कपल्ड विद द जीपीसीआर। थर्ड टाइप होता है न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेटेड आयन चैनल विच आर जीपीसीआर, है ना। फॉर एग्जांपल एसिटिल कोलिन, डोपामाइन, नॉरएड्रेनालिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, एंडोर्फिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन मतलब सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, दे आर द टारगेट्स फॉर एनाल्जेसिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स एंड एंजियोलाइटिक ड्रग्स। तो ये कैसे होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर, है ना, this is your nerve cell membrane, neuronal membrane, okay? So this is outside external, okay? So what happens, neuronal membrane has a receptor, neurotransmitter will be released, ये neurotransmitter release होगा upon the signal, जैसे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन को सिग्नल आता है या प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन को इम्पल्स आता है, so when as soon as pre synaptic neuron will get impulse, so neurotransmitter will be released, so it will act on this it will act on a receptor present on the neuronal membrane. There is activation of G protein coupled receptor. G protein will generate a secondary messenger like cyclic AMP, inositol 3-phosphate, DAG, calcium. Now these secondary messenger will cause phosphorylation of proteins and they will cause a long term effects, okay? And it may be either, okay, it may be directly open the ion channels, यहाँ पे ion channel भी open कर सकते हैं, okay? So ion channel rapid action. So that's how different drugs will act. So most of the drug acting on CNS, they will act by blocking the particular type of ion channel either directly or via neurotransmitter. Some will stimulate the neurotransmitter, some will act as a agonist to the receptor, like that, ठीक है, we'll see it. So secondary messenger क्या होते हैं, आपने देखा है already in the when we are discussing about the receptor. So secondary messenger cyclic AMP, inositol 3-phosphate, diacylglycerol, calcium, protein phosphorylation, okay, that's now very important. Well, next part is a different types of neurotransmitter, very important, different types of neurotransmitter and their nature and their function. ये important चीज है, आपको याद रखना है, neurotransmitters, their nature and their mechanism. So different neurotransmitters in the CNS. पहला neurotransmitter कौन सा है? So first one is the glutamic acid. First neurotransmitter. What are the neurotransmitter? क्या होता है neurotransmitter? They are also known as the chemical messengers. They are synthesized and stored in the synaptic vesicles. जो synapse होता है, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको synapse बोलते हैं. एंड प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के टर्मिनल एंड में, इन द टर्मिनल एंड ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, सो न्यूरोट्रांसमीटर्स दे आर सिंथेसाइज्ड लोकली, दे आर स्टोर्ड इन द सिनेप्टिक वेसिकल्स एंड अपॉन द सिग्नल दे आर रिलीज्ड, दे विल ट्रांसमिट ए मैसेज टू द अनदर न्यूरॉन, राइट? सो न्यूरोट्रांसमीटर और केमिकल मैसेंजर, दे मे बी आइदर अमाइन और अमाइनो एसिड और पेप्टाइड, ओके, और पेप्टाइड और, है ना, प्रोटीन. We'll see that. So पहला होता है ग्लूटामिक एसिड. So what is the nature of glutamic acid? So glutamic acid is a stimulatory neurotransmitter. याद रखना है आपको, glutamic acid is a stimulatory neurotransmitter. So activation of glutamic acid will stimulate something, will stimulate the muscle contraction or will stimulate the release of something, etc. So glutamic acid क्या है? Stimulatory होता है. Glutamic acid is a stimulatory neurotransmitter. So what it does, क्या करता है ये? It will increase the influx of cations. मतलब आयन चैनल के थ्रू, है ना, कैटायन का एंट्री कर देगा, है ना. It will move sodium, calcium from outside to inside cell. So it is directly coupled होता है ये, okay. So it may be directly coupled or coupled with the G protein. तो डायरेक्टली भी ग्लाइसिन रिसेप्टर हो सकता है, ग्लूटामिक रिसेप्टर हो सकता है ना, ग्लूटामेट रिसेप्टर होता है, ग्लूटामिक एसिड का रिसेप्टर होता है ग्लूटामेट. तो ग्लूटामिक एसिड इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, इट विल एक्ट ऑन इट्स रिसेप्टर. इट्स रिसेप्टर कौन सा है? ग्लूटामेट रिसेप्टर, ग्लूटामेट रिसेप्टर का रिसेप्टर क्या रहेगा? ग्लूटामेट. So glutamic acid is a stimulatory neurotransmitter
it will act on a glutamate receptor. It will either open the ion channel, it may be either directly open the ion channel or it may be coupled with the GPCR. For example है इसका NMDA receptor. कौन सा receptor? NMDA. NMDA मतलब क्या? N मतलब N, M मतलब methyl, D मतलब D aspartate. NMDA मतलब क्या? N methyl D aspartate. So it is a N methyl D aspartate. So it is a receptor which is type of glutamic acid receptor and it is a target for ketamine. So ketamine क्या है? Ketamine is a general anesthetic drug. Ketamine will produce a dissociative anesthesia and it is a NMDA receptor blocker. Ketamine क्या होता है? NMDA receptor blocker. तो glutamic acid. सेकंड होता है GABA, नॉट बाबा, है ना? बाबा नहीं, GABA मतलब क्या? gamma amino butyric acid. So it is an inhibitory neurotransmitter. ये CNS में होता है. It is an inhibitory. So it will decrease the functioning. It will inhibit. It will suppress the impulse formation. It will suppress the impulse conduction. ठीक है? So GABA means gamma amino butyric acid. So it is inhibitory in nature. So what it does? So it will increase the influx. It will increase the influx of chloride. So it will send chloride ion from outside to inside cell. तो क्लोराइड आयन चैनल ओपन करेगा और क्या करता है? क्लोराइड का मूवमेंट करता है ना? सो इट विल मूव क्लोराइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू द इंट्रासेलुलर so that there is a hyperpolarization of post-synaptic membrane and suppression of impulse formation and impulse conduction. ठीक है? और inhibition. It will either increases the chloride influx or potassium efflux. पोटेशियम को बाहर निकालेगा, क्लोराइड को अंदर डालेगा. राइट? It is this GABA receptor is directly coupled with the ion channel. So it may be directly coupled with the ion channel. It is directly coupled with the ion channel. GABA receptor क्या है? Directly coupled with the ion channels. तो टाइप होता है ना GABA receptor A, GABA receptor B. So most of the है ना barbituric acid, barbiturates and benzodiazepines, they will act as an agonist to the GABA receptor. Yeah. So levels of this GABA is increased by sedative, hypnotic and anti-convulsant drugs and also by some muscle relaxants. जैसे यहाँ पे बैक्लोपिन एग्जाम्पल है, मसल रिलैक्सन का एग्जाम्पल है बैक्लोपिन. So baclofen act as a GABA agonist, increases the GABA level. Diazepam, then barbiturates, they act as a sedative, hypnotic, anticonvulsant by increasing the GABA level. Okay, even right. So GABA is an inhibitory neurotransmitter. याद रखना है आपको. Right. Next one is acetylcholine. So acetylcholine or ACH is a neurotransmitter for cholinergic nerve. किसके लिए न्यूरोट्रांसमीटर है? cholinergic nerve or parasympathetic nerve ending. So it is a neurotransmitter for the parasympathetic nerve ending, acetylcholine. Okay? So it has a different receptor. Acetylcholine के different receptor होते हैं. जैसे होता है muscarinic receptor होता है, nicotinic receptor होता है. muscarinic में M1, M2, M3 होता है. nicotinic में NM होता है, N होता है. So detail we'll see when we'll see the drug acting on ANS. So acetylcholine is a neurotransmitter for cholinergic system. So it will act on a muscarinic receptor, a nicotinic receptor. So it stimulates the muscarinic receptor. Now stimulation of this ये कौन सा है? This receptor is G protein coupled receptor. It is coupled with the G protein. So decreases the potassium efflux via formation of secondary messenger diacylglycerol. Then M2 भी होता है, M1, M2, M3 मैंने बोला. M2 is inhibitory in nature, है ना? Which increases the potassium efflux via cyclic AMP formation. मतलब एसिटिलकोलिन के रिसेप्टर कितने हैं? मस्करिनिक रिसेप्टर है, निकोटिनिक रिसेप्टर है. तो मस्करिनिक में M1 आता है, M2 आता है, M3 आता है. तो M1 क्या है? स्टिमुलेटरी होता है ना? M2 क्या है? इनहिबिटरी होता है ना? निकोटिनिक रिसेप्टर क्या है? सही है, N स्टिमुलेटरी व्हिच इंक्रीजेस द सोडियम इनफ्लक्स. निकोटिनिक NN रिसेप्टर जो होता है, NM रिसेप्टर है ना? NM रिसेप्टर स्टिमुलेटरी होता है, न्यूरोमस्कुलर में होता है. So these are the targets for nicotine, acetylcholinesterase inhibitors, drug used in the Alzheimer's, drug used in the Parkinson's disease. So acetylcholine or its receptor are the targets for drug used in the Alzheimer's or anti-Parkinson drugs. Okay. Next देखो न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामाइन. कौन सा माइन? डोपामाइन है ना? डोपामाइन इज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. देखो क्वेश्चन आ सकता है आपको एज इट इज, है ना? बताता हूँ मैं आपको क्वेश्चन कैसे आएगा इसके ऊपर. So dopamine is a inhibitory neurotransmitter
there are different receptors of dopamine, D1, D2, D3, D4, है ना, D5. तो dopamine का receptor होता है D1, D2, D3, D4. So all they are the receptor subtypes are coupled with the G protein coupled receptor, and they after activation of the receptor there is a generation of cyclic EMP, and it will activity will increase this, you know, the dopamine receptor are stimulated by anti-Parkinson drugs, or dopamine activity is decreased by, or dopaminergic receptor is inhibited by antipsychotic. Most of the antipsychotic drug they inhibit the D2 receptor, है ना. anti-Parkinson drug क्या करेंगे, drug used in the Parkinsonism, वो क्या करेंगे, they will act as the agonist for dopamine receptor. तो याद रखना है dopamine is a inhibitory receptor. Then noradrenaline क्या है, stimulatory receptor है. Noradrenaline क्या है, it is a stimulatory neurotransmitter. Noradrenaline is a stimulatory neurotransmitter. It may be either stimulatory or inhibitory depending upon the receptor, you know. ठीक है, रिसेप्टर होता है इसका. नॉरएड्रेनालिन का रिसेप्टर क्या है, अल्फा एंड बीटा. तो अल्फा में होता है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा में होता है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3. सो नॉरएड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर will have a different receptor. It is known as a adrenergic neurotransmitter. It is a sympathetic neurotransmitter. ये क्या है, sympathetic neurotransmitter है, neurotransmitter for sympathetic nervous system. It is a neurotransmitter for parasympathetic nervous system. ठीक है, तो एसिटिलकोलिन पैरासिम्पैथेटिक का न्यूरोट्रांसमीटर है, नॉरएड्रेनालिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है. नॉरएड्रेनालिन हैज अ रिसेप्टर लाइक अल्फा एंड बीटा. तो अल्फा में अल्फा हैज अ सबटाइप अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा हैज सबटाइप बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3. देयर लोकेशन, देयर एक्शन विल सी इन द ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस, है ना. तो पहले से भी इंट्रोडक्शन चल रही है. नाउ इट मे बी द स्टिमुलेटरी इनहिबिटरी एंड स्पीडिंग अप ऑफ, है ना. It action will depend on the generation of secondary messenger and coupling. Now it may be modified by CNS stimulant, antidepressant and some anxiolytic drugs. कुछ anxiolytic CNS stimulant, antidepressant ड्रग ये मॉडिफाई करते हैं, है ना. एड्रेनर्जिक ड्रग भी मॉडिफाई करते हैं. देन नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर इज अ सेरोटोनिन और आल्सो नोन एज अ 5-hydroxytryptamine. सेरोटोनिन और 5-hydroxytryptamine. Now serotonin is a stimulatory or inhibitory depending upon the depending upon the receptor subtype. Serotonin may be either stimulatory or inhibitory depending upon the receptor subtypes. They also generate a secondary messenger. इसमें 5HT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are 8 receptor. There are 8 serotonin receptor. So out of that 8 receptor, 5HT3 जो होता है, it is ion channel. 5HT3 1, ना, मतलब 5HT1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are 8 receptor for serotonin or 5HT. So out of that 8 receptor, 5HT3 is ion channel and all other are the G protein coupled receptor. तो इसके ऊपर कम से कम 4 बार क्वेश्चन आ चुका है अब तक. ओके, ये मैंने this I already told you this thing when we are discussing the receptor. जब receptor पढ़ रहा था उस टाइम पे मैंने ये बोला है आपको, right? So serotonin is a target for CNS stimulant drugs, antidepressant drugs and anxiolytic drugs. ठीक है. Then again endogenous peptides. Another neurotransmitter is endogenous peptides. जैसे आपका endorphin वगैरह वगैरह. So they are the inhibitory in nature. Their subtypes, they are having subtypes, you know. Their coupling will be with the secondary messenger and they are the targets for opioidal analysis. They are the targets for opioidal analysis. तो जो morphine, codeine, thebaine वाले ड्रग्स है, morphine, codeine, thebaine, they act via this receptor. ठीक है, they act via this receptor. Okay, so they are the different न्यूरोट्रांसमीटर. यहाँ पे क्या है, डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना, डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स, है ना. ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, है ना, गाबा, देन ग्लूटामेट, देन योर एसिलकोलिन, एड्रेनालिन, मतलब ए नॉरएड्रेनालिन, सेरोटोनिन. तो देयर आर different type of neurotransmitters which has a different receptor, and most of the drugs
which act on a CNS acting drug, they will either stimulate the receptors of these neurotransmitter or inhibit the receptors of these neurotransmitter. मतलब सिंपल क्या है कि ड्रग एक्टिंग ऑन CNS जो है, मोस्ट ऑफ द ड्रग दे विल एक्ट वाया दीज रिसेप्टर्स. इनके रिसेप्टर जो है उसको इधर स्टिमुलेट करेंगे या फिर ब्लॉक करेंगे या फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस बढ़ाएंगे या फिर न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस कम करेंगे. तो मोस्ट ऑफ दिस ड्रग एक्ट वाया दिस वे. So that's why we have to discuss this. Again, you can see different neurotransmitters and their distribution in the CNS and their effect. Now, again एक बार देख लो क्योंकि ये important है. Neurotransmitters, their distribution and their effects, right? पहला है देखो acetylcholine. Acetylcholine is a neurotransmitter for cholinergic nervous system or parasympathetic nervous system. So acetylcholine is found in the all regions of CNS. CNS में पूरे रीजन में क्या है, एसिटिलकोलिन पाया जाता है. एंड इट इज अ प्रीडोमिनेंटली इन द बोथ सेरेब्रल कॉर्टेक्स एज वेल एज रेटिकुलर सिस्टम एंड सेरेबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये सब मतलब ऑल ओवर ब्रेन में होता है. तो इन द ऑल रीजन ऑफ सीएनएस प्रीडोमिनेंटली इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स असेंडिंग रेटिकुलर सिस्टम सेरेबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड में ये क्या होता है, एसिटिलकोलिन. नाउ इट हैज अ बोथ एक्शन स्टिमुलेटरी एज वेल एज इनहिबिटरी, बोथ एक्साइटेटरी एज वेल एज इनहिबिटरी इन नेचर. Central actions of this acetylcholine can be blocked by atropine. Atropine क्या है? Atropine is an antagonist to the acetylcholine. So central action can be blocked by atropine, antagonist है. Then next आता है noradrenaline. So noradrenaline is highly concentrated in the hypothalamus and limbic system. तो limbic system में hypothalamus में ये noradrenaline होता है. Also present in the reticular formation in the and also in the brainstem. So again it is a both stimulatory as well as inhibitory, excitatory as well as inhibitory. You know. Now dopamine. So it is mostly present in the basal ganglia. Mostly present in the basal ganglia and median hypothalamic emanations. Median hypothalamic emanations and then adenohypophysis and frontal cortex. ब्रेन के इन एरियाज में डोपामाइन कंटेनिंग न्यूरॉन होते हैं. बेसल गैंग्लिया ना, मीडियन इम्यूनेशंस ऑफ हाइपोथैलेमस, एडेनोहाइपोफाइसिस एंड फ्रंटल कॉर्टेक्स. तो अगेन ये क्या होता है, द डोपामाइन इज इनहिबिटरी इन नेचर. डोपामाइन इज इनहिबिटरी इन नेचर एंड एक्शंस ऑफ डोपामाइन कैन बी, है ना, डिफिशियंसी ऑफ डोपामाइन कैन कॉज एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टर्बेंसेस. मतलब deficiency of dopamine can cause Parkinsonism, deficiency of dopamine containing neuron or degeneration of dopamine containing neuron or dopaminergic neuron. एंड आपने देखा है नर्वस सिस्टम में degeneration of dopaminergic neuron or dopamine containing neuron results in the Parkinsonism, है ना, right? Now 5-hydroxytryptamine 5-HT. So this 5-HT or serotonin is present in the cerebral cortex, then raphe nucleus and hippocampus area, right? So again 5-hydroxytryptamine is again stimulatory as well as inhibitory, है ना. नेक्स्ट आता है हिस्टामाइन. हिस्टामाइन क्या है, अगेन इट इज सिमिलर टू नॉरएड्रेनालिन, मतलब स्टिमुलेटरी इनहिबिटरी होता है, but it is irregular in the brain, है ना. इसके में ब्रेन में फंक्शन होता है मेनली इनहिबिटरी. ठीक है. तो नेक्स्ट ना, नेक्स्ट विल सी, नेक्स्ट इज नथिंग बट द, है ना, देखो इसमें, है ना, नेचर भी लिखा है यहाँ पे. तो वट एवर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर देयर, अपने ये देखा है कौन से. तो अभी देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है ना, either they will ask you question like this. So GABA is dash neurotransmitter in the brain. मतलब GABA is a inhibitory neurotransmitter in the brain. They may ask you dopamine is a dash neurotransmitter in the brain. Dopamine is a inhibitory neurotransmitter in the brain. They can ask you question like this, glutamic acid or glutamate. इसको ही glutamate बोलते हैं. Glutamic acid is a dash neurotransmitter. Glutamic acid is a stimulatory neurotransmitter. Or they can either ask you like this, match the following type of neurotransmitter with their action, respective action. ऐसा भी पूछ सकते हैं. ठीक है. Then right,
अगेन दे लॉट ऑफ टाइम्स दे ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है, व्हाट इज द नेचर ऑफ एसिटिलकोलिन, मतलब व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ एसिटिलकोलिन। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर। तो अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर कौन है? एसिटिलकोलिन इज अ अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर, नॉरएड्रेनालिन इज अ अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामाइन इज अ अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर, 5-hydroxytryptamine 5-HT is a amine neurotransmitter, histamine is a amine neurotransmitter. So all these neurotransmitters they are having amine in their structure. ये amino group होता है इसमें, है ना? That's why they are known as the amine neurotransmitter. So chemical nature of neurotransmitter. So all they are the amine. Acetylcholine, noradrenaline, dopamine, 5-HT and histamine. All they are the amine neurotransmitter. अभी देखो next आएगा आपका amino acid neurotransmitter. So nature of these. So amino acid neurotransmitter, ये क्या है? अमीनो एसिड। फॉर एग्जांपल क्या है? ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, व्हाट आर दे? अमीनो न्यूरोट्रांसमीटर। गामा क्या है? गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड इज अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर। सो अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर्स में आता है एल ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड एंड गाबा ग्लाइसिन। तो गाबा ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ऑल दे आर द अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर। नेचर क्या है? GABA, glycine, aspartic acid, glutamic acid, they are the amino acid. Now glutamic acid, aspartic acid found in the CNS, central nervous system and spinal cord. Aspartic acid and glutamic acid they are the stimulatory neurotransmitter. ये आपने देखना है, याद रखना है, stimulatory neurotransmitter, excitatory और stimulatory. गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड और ग्लाइसिन। गाबा जो है, गाबा क्या होता है? गाबा इज प्रेजेंट इन द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? गाबा होता है ना। एंड ग्लाइसिन कहाँ पे होता है? ग्लाइसिन इज प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम। ग्लाइसिन इज प्रेजेंट इन द ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड। ग्लाइसिन, गाबा बोथ आर द इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो ग्लाइसिन एंड गाबा बोथ आर द इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ग्लाइसिन क्या है? इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, बहुत बार आ चुके हैं। तो aspartic acid, glutamic acid, GABA and glycine, they are the amino acid neurotransmitter, याद रखना। Next, some amino acids are the protein in nature or peptide in nature. Peptide neurotransmitter कौन से? Peptide neurotransmitter. So first is the substance P and second is the cholecystokinin. So this substance P and cholecystokinin, ये दो क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है जो पेप्टाइड है, प्रोटीन नेचर है, राइट। सो substance P is present in the hypothalamus, थैलेमस, बेसल गैंग्लिया, डोर्सल कॉलम ऑफ एंड डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड में होता है, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस में एंड एंटेरिक नर्वस सिस्टम में। तो सब्सटेंस पी इज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। कोलेसिस्टोकाइन प्रेजेंट इन द ब्रेन एरियाज लाइक कॉर्टेक्स, हिपोकैम्पस, लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। और कोलेसिस्टोकाइन पैंक्रियाज में भी होता है। तो इट इज इनिबिशन ऑफ ईटिंग एंड स्टिमुलेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन रिलीज, इसका एक्शन है, राइट। तो न्यूरोट्रांसमीटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 केमिकल क्लासेस। फर्स्ट क्लास है ना, न्यूरोट्रांसमीटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस बेस्ड अपॉन देयर केमिस्ट्री, बेस्ड अपॉन देयर लोकेशन, बेस्ड अपॉन देयर फंक्शन। तो याद रखना है, ये क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, सबके लिए, है ना। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप डिपेंडिंग ऑन, है ना। तो न्यूरोट्रांसमीटर डिपेंडिंग ऑन द फंक्शंस, neurotransmitter depending on the functions they are classified as a either excitatory or stimulatory and inhibitory, है ना। stimulatory neurotransmitter कौन है भाई? acetylcholine, noradrenaline, 5-HT and glutamic acid. So acetylcholine, noradrenaline, 5-hydroxytryptamine and glutamic acid, acetylcholine, noradrenaline and serotonin, they are the stimulatory or excitatory neurotransmitter. Inhibitory कौन है? Inhibitory neurotransmitters they are nothing but the GABA, glycine and alanine. Glycine and GABA are the inhibitory neurotransmitter. तो क्वेश्चन आपको आ सकता है, one of the following is stimulatory और excitatory. तो stimulatory कौन है? Inhibitory कौन है? याद रखना है। Stimulatory है आपका acetylcholine, noradrenaline, 5-HT, glutamic acid, aspartic acid. इनिबिटरी कौन है? ग्लाइसिन एंड अमाइन, ग्लाइसिन एंड गाबा। नाउ लोकेशन, एज पर लोकेशन दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप अगेन। लोकेशन है ना, कोई
न्यूरोट्रांसमीटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, कोई पेरिफेरल में होता है. तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, अगेन दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप. तो सेंट्रल न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड पेरिफेरल न्यूरोट्रांसमीटर. सेंट्रल न्यूरोट्रांसमीटर कौन है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एसिटिलकोलिन होता है, डोपामाइन होता है, हिस्टामाइन होता है, 5-HT होता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नॉरएड्रेनालिन एंड एसिटिलकोलिन, याद रखना है, नॉरएड्रेनालिन एंड एसिटिलकोलिन. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से कैसे क्लासिफाई करेंगे इसको? केमिस्ट्री से, सो है ना, केमिस्ट्री से अमाइन 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 न्यूरोट्रांसमीटर और अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर और है ना, और पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे अपन ने बोला है ना, पहले देखा है अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर, ये देखा है अमाइनो एसिड्स, ये देखिए पेप्टाइड. यू कैन सी अमाइन और अमाइनो एसिड्स. तो अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन, नॉरएड्रेनालिन, 5-HT, डोपामाइन, ऑल दे आर द अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर. अमाइनो एसिड कौन है? GABA is a amino acid neurotransmitter. Glycine is a amino acid transmitter. Now, glycine and GABA are the GABA, glycine, aspartic acid, glutamic acid. They are the amino acid neurotransmitter. अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर कौन है? जैसे आपने देखा है ना, अपन ने देखा है ना, क्या है? एसिटिलकोलिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामाइन, है ना, दैट इज अ अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर. पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर कौन है? पेप्टाइड, तो एनकेफेलिन इज देयर, एंडोर्फिन इज देयर, डायनोर्फिन, substance P, vasoactive intestinal peptide, VIP, vasoactive intestinal peptide, VIP. So peptides like enkephalin, endorphin, dynorphin, अभी ये endorphin, dynorphin, substance P, these are the targets for opioidal analgesic. ये सब opioidal analgesic act करते हैं. We are going to see in the detail. Very very important, ये important है, मैंने बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पे समराइज करके आपको एक ओवरव्यू दे दिया है उसका. बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर, राइट. रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, राइट. तो न्यूरोट्रांसमीटर, देयर नेचर एंड देयर मैकेनिज्म, देन अगेन क्लासिफिकेशन एज वेल एज देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन अपने देखा है. तो अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर, ACH, ये सब क्या है? अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर, अमाइन कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर. ये क्या है? ये अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर. ये क्या है? प्रोटीन न्यूरोट्रांसमीटर, पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर, राइट. नाउ these amino these neurotransmitters, they are synthesized locally, they are stored and they are released upon the signal. Now there are certain important features of these neurotransmitter. कि न्यूरोट्रांसमीटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर के कुछ फीचर्स होते हैं. क्या फीचर्स है भाई? What are the important characteristics of neurotransmitter? What are the important, है ना, important features of neurotransmitter? तो सबसे पहले एक पहला फीचर है कि न्यूरोट्रांसमीटर दे हैव प्रीकर्सर. प्रीकर्सर मतलब क्या? प्रीकर्सर मतलब जिससे बनता है वो, है ना. न्यूरोट्रांसमीटर दे हैव प्रीकर्सर, दे आर सिंथेसाइज्ड, बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रीकर्सर. प्रीकर्सर जैसे एसिटिलकोलिन का प्रीकर्सर क्या है भाई? है ना, एसिटिल कोए है एंड कोलिन बेस है. तो नॉरएड्रेनालिन का प्रीकर्सर कौन है भाई? टायरोसिन अमीनो एसिड है ना. 5-HT का प्रीकर्सर कौन है? सेरोटोनिन का प्रीकर्सर कौन है? ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है. हिस्टामाइन का प्रीकर्सर कौन है ना, हिस्टामाइन का प्रीकर्सर कौन है? हिस्टिडीन अमीनो एसिड है ना. तो ऑल न्यूरोट्रांसमीटर दे आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम some compound in a body known as a precursor. So these neurotransmitter, पहला कैरेक्टर है आपका, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, दे हैव बायोसिंथेटिक प्रीकर्सर. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, they are synthesized and stored in the neuronal endings. Third characteristic, they are released upon the signal. Fourth characteristic, they have their own receptor. जैसे एसिटिलकोलिन का रिसेप्टर है मस्कर्निक एंड निकोटिनिक. एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन का रिसेप्टर है अल्फा बीटा, है ना. हिस्टामाइन का रिसेप्टर है हिस्टामाइन 1 2 3 4. 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोमाइन, 5-HT का रिसेप्टर होता है 5-HT 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना. देन ग्लाइसिन रिसेप्टर, GABA का रिसेप्टर है. सो ऑल दिस न्यूरोट्रांसमीटर दे विल हैव रिसेप्टर, राइट. फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक देखो, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैव एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट. Neurotransmitter also has an agonist and antagonist. मतलब their actions can be increased, their action can be blocked, right? So I hope you are getting my voice. If you are getting my voice, if you are able to see the screen, please write yes in the comment box. You know,
Now synthesis, storage and release of acetylcholine. So details of this we are going to see in the respective chapters. एक just overview यहाँ पे है, जैसे acetylcholine है आपका acetylcholine. So we are going to see we are going to see in the detail when we will see cholinergic drugs. At that time I will explain. But again यहाँ पे देखो acetate plus CoA, acetate plus CoA बनेगा आपका acetyl-CoA. Acetate plus CoA, acetyl-CoA, and choline is the nitrogenous base. Choline is a nitrogen containing base. So acetyl-CoA plus choline that is condensed by choline acetyl transferase enzyme. Their synthesis ना एक और फीचर होता है न्यूरोट्रांसमीटर का, जैसे मैंने बोला दे ऑफ प्रिकर्सर, दे हैव बॉडी हैज अ एंजाइम व्हिच कैन सिंथेसाइज द न्यूरोट्रांसमीटर. बॉडी में एंजाइम भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसिटिलकोलिन यू हैव एंजाइम नोन एज अ कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज, राइट. तो यहाँ पे बनेगा एसिटिलकोलिन एंड कोए. Now they are metabolized by again enzymes. Cholinesterase enzyme is there which metabolize the acetylcholine to choline and acetyl. ठीक है, तो acetylcholine is synthesized in this manner. अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, और एक बार होगा आपको when we will see cholinergic drugs. At that time we will see the synthesis, storage, metabolism of acetylcholine again. ठीक है, again यहाँ पे देखो synthesis of noradrenaline, adrenaline, dopamine. Okay? So there is a biosynthetic precursor अमीनो एसिड नोन एज अ टायरोसिन. यहाँ पे टायरोसिन क्या लगता है बायोसिंथेसिस के लिए, क्या लगता है टायरोसिन, किसके, सबके, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामाइन, राइट. सो टायरोसिन, और इसके पहले टायरोसिन बनने के लिए लगता है फिनाइल अलानिन, तो फिनाइल अलानिन, राइट. So if you have phenylalanine amino acid, phenylalanine or tyrosine is required for the synthesis of these neurotransmitters. So first phenylalanine is converted into tyrosine, and tyrosine is converted into dopa, that is the hydroxyphenylalanine. Then deamination, there is a decarboxylation, and that leads to dopamine. बाद में डोपामाइन में क्या होता है, डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है. यहाँ पे देयर इज अ एडिशन ऑफ दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप व्हिच यू आर गोइंग टू गेट नॉरएड्रेनालिन, और बाद में नॉरएड्रेनालिन का एन मिथाइल ट्रांसफरेज, इसके ऊपर एक मिथाइल ऐड होता है यहाँ पे, दैट इज एड्रेनालिन. तो व्हेन वी आर गोइंग टू व्हेन विल सी द ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस, उसमें सिंपैथेटिक ड्रग्स, पैरासिम्पैथेटिक ड्रग, सिंपैथोमाइमेटिक्स, सिंपैथोलाइटिक्स, है ना, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, पैरासिम्पैथोलाइटिक, ऐसे 4-5 चैप्टर है वहाँ पे. So during that I will go again, I am going to explain you again these things, how there is synthesis, storage, release of noradrenaline, adrenaline, dopamine, acetylcholine in the respective chapters. Now here just for your induction part, okay, just for your induction part. तो देखो यहाँ पे एंजाइम्स भी लिखे हैं, टायरोसिन इज कन्वर्टेड इनटू डोपा बाय एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, यहाँ पे और एक OH ग्रुप ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा. देन यल डोपा डीकार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेज क्या करेगा, ये जो COH ग्रुप है ये रिमूव कर देगा. देन डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, मतलब क्या, यहाँ बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप ऐड होगा. देन फिनाइल इथाइलामाइन एन मिथाइल ट्रांसफरेज, एन मिथाइल ट्रांसफरेज विल ट्रांसफर मिथाइल ग्रुप over here, right. So synthesis, storage and release of these neurotransmitters, so we'll see in the detail when we'll see the respective chapters, but just for your introduction part I have taken this. Now they are synthesized in the nerve ending. ये neurotransmitter कहाँ पे synthesize होते हैं, nerve ending. So you can see over here presynaptic cholinergic receptor, right. It is a cholinergic neuron, not parasympathetic neuron. What happens, acetyl-CoA plus choline will combine to form a acetylcholine, which is synthesized and stored in the synaptic vesicle. ये क्या है, synaptic तो cholinergic neuron, जैसे adrenaline कहाँ पे होगा, noradrenaline कहाँ पे होगा, noradrenaline will be present in the sympathetic nerve ending,
So likewise, acetylcholine will be present in the parasympathetic nerve ending. This is the parasympathetic nerve, right? So where acetylcholine is synthesized in the neuronal ending, stored in the synaptic vesicle, and it is it is released by the exocytosis upon the signal. तो जब रिलीज होगा, रिलीज विल बी देयर. तो रिलीज होने के बाद में इट विल एक्ट ऑन अ पोस्ट साइनेटिक रिसेप्टर. यहाँ पे रिसेप्टर होंगे, ओके, एंड दैट विल आइदर अल्टर द आयन चैनल और इट विल आइदर डायरेक्टली एक्ट on G protein receptor. Some part of this neurotransmitter will be metabolized by cholinesterase, and some part will be uptaken, and the release is controlled by pre-synaptic receptor, right? And that's how they are synthesized, stored and released. So again we are going to discuss in the respective chapter. ठीक है, तो इसका भी synthesis storage ऐसे होता है, right? Now we'll see the general anesthetics. Right? So what do you mean by general anesthetics? What do you mean by general anesthesia? What do you mean by general anesthetics? So general anesthetics मतलब क्या है, right? General anesthetics, these are the agents, these are the drugs, these are the molecules. General anesthetic drugs or general anesthetics agents, they are the chemicals, they are the drugs which causes reversible loss of consciousness with the loss of pain. Reversible loss of pain, है ना? So basically technical definition of general anesthetics, these are the drugs which causes the loss of all modalities of pain. मतलब जितने भी पेन के टाइप होते हैं, all pain will be lost. So general anesthetics are the drugs which causes loss of all modalities of pain with the reversible loss of consciousness. With the reversible loss of consciousness. मतलब क्या करेंगे जनरल एनेस्थेटिक्स, क्या करेंगे, आपका जो भी पेन सेंसेशन है वो सब सप्रेस कर देंगे. पेन सेंसेशन, आपको जो पेन फीलिंग होता है वो पेन फीलिंग नहीं होगा. विद द रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब आपको अनकॉन्शियस बना देंगे वो, बट वो अनकॉन्शियसनेस रिवर्सिबल है, मतलब कायम स्वरूप नहीं है ना. परमानेंट अनकॉन्शियसनेस इज नॉट देयर. सो जनरल एनेस्थेटिक्स आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड बिफोर द सर्जरी. ओके, बिफोर द सर्जरी. अगर आपका पैर टूट गया है ना, आपने नया एफजेड बाइक लिया और आप हवा में किसी को इम्प्रेस करने के लिए एफजेड बाइक को उल्टे सीधे चला रहे हो, है ना, छपरी की तरह चला रहे हो उल्टा सीधा किसी को इम्प्रेस करने के लिए एफजेड बाइक, और ऊपर क्या हो गया, आपको एक तो बारिश के दिन है वो मार गया स्लिप मार गया, तो आपका टूट गया टांग, आपका पैर टूट गया, है ना. मुझे ज़्यादा कुछ इंजरी नहीं करना है आपको, बट पैर टूट गया आपका, तो ऑब्वियसली वो उसको सर्जिकल रिपेयर करना है. सो यू नीड अ सर्जरी. तो सर्जरी करने के लिए अगर बिना एनेस्थीसिया दे ही आपको सर्जरी करेंगे तो आप वो देख के ही मर जाओगे. मतलब देख रहा है कि डॉक्टर आ रहा है ना, बड़ा सा हथियार लेके आपका पैर काट रहा है, आपको वहाँ पे जॉइंट अटैच कर रहा है, वहाँ पे सील कर रहा है, वहाँ पे कील मार रहा है, वहाँ पे प्लेट लगा रहा है, ये देख के ही मर जाओगे ना आप. और आप काटने दोगे क्या उसको? नहीं. सो फॉर दैट पर्पज, फॉर द पर्पज ऑफ सर्जरी, a anesthesiologist will inject a anesthetic drug to you before surgery, and the patient will be unconsciousness and patient will not feel any kind of pain. So what are the general anesthetics? These are the drugs which causes the loss of all modalities of pain sensation with the reversible loss of consciousness. तो मतलब सब कुछ पेन सेंसेशन चला जाएगा आपका, आपके सामने आपका पैर काटेगा डॉक्टर, लेकिन आपको कुछ नहीं फील होगा. मतलब खतरनाक है ना, आपके सामने आपका हाथ काट रहा है लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, आप हंस रहे हो. दैट इज नथिंग बट द जनरल एनेस्थेटिक्स. सो जनरल एनेस्थेटिक्स आर द ड्रग व्हिच विल कॉज लॉस ऑफ ऑल मॉडलिटीज ऑफ पेन सेंसेशन with the reversible loss of consciousness. Okay, so now general anesthetics, they are indicated before the surgery. Now what are the classification of general anesthetics? We'll see the details. First we'll see the classification. So general anesthetics, so in a 1847, I would like to give you some history. Before 1847 there was no general anesthetics was developed.
सो बिफोर दैट हाउ देयर वाज अ सर्जरी, है ना. 1847 के पहले सर्जरी कैसे होता था, है ना, जब एनेस्थेटिक एजेंट नहीं थे. सो बिफोर 1847 हाउ देयर वाज अ सर्जरीज. सो सर्जरीज वाज लाइक दिस, जैसे वहां पे दे वेर यूजिंग अल्कोहल, दे वेर यूजिंग ice, they were using alcohols, okay. And that time surgeries was very painful, you know. So after that there was one scientist known as Horace, Dr. Horace. So he tried to demonstrate the general anesthetic. उन्होंने होरेस वेल नाम का एक साइंटिस्ट था. इन 1847, है ना, he was tried to demonstrate the effectiveness of your anesthetic by using a nitrous oxide. उन्होंने nitrous oxide लेके, it was a dentist. So Horace Well was a dentist doctor and he tried to demonstrate the effect of anesthetic for the surgery, है ना. But he failed, वो तो फेल हो गए, उन्होंने properly demonstrate नहीं किया. So before he tried to give the nitrous oxide to the patient, but उसको डर लग गया, मर जाएगा बोल के उन्होंने विड्रॉ कर लिया, राइट. सो आफ्टर दैट देयर वाज अनदर साइंटिस्ट नोन एज विलियमसन, सो हु वाज आल्सो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ द टीम, है ना. मतलब वही होता है ना कि, है ना, नैले पे दैला मार देना, है ना, मौके पे चौका मार देना. तो पहले होरेस वेल नाम के डॉक्टर थे, डेंटिस्ट थे. 1847 में उन्होंने क्या किया कि जनरल एनेस्थेटिक का यूज किया फर्स्ट टाइम. कौन सा? नाइट्रस ऑक्साइड. तो नाइट्रस ऑक्साइड दे दिया पेशेंट को, लेकिन वो पेशेंट को प्रॉपरली पूरा बॉडी में जाने से पहले उसने विड्रॉ कर लिया. वो एक्सपेरिमेंट उनका फेल हो गया. तो वहीं पे उनके एक साथीदार थे विलियमसन. देयर वाज वन साइंटिस्ट नोन एज विलियमसन. तो ही वाज द पार्टिसिपेंट, वो टीम में थे. तो उन्होंने बाद में 1847 में, तो 1847 में उन्होंने क्या किया, ही डेमोन्स्ट्रेटेड द एनेस्थेटिक एजेंट बाय यूजिंग ए ईथर. उन्होंने ईथर यूज करके एनेस्थेसिया प्रोड्यूस किया, है ना. एंड ही हैज ऑपरेटेड द पेशेंट, राइट. तो है ना, मौके पे चौका उसने मार दिया, है ना. फर्स्ट ट्राई किसने किया? फर्स्ट ट्राई. सो फर्स्ट होरेस वेल वाज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स, बट ही फेल्ड. एंड his co-worker known as Williamson, he demonstrated general anesthetic by using ether. Okay, so classification क्या है? So these are the drug which causes the loss of all modalities of pain sensation with the reversible loss of consciousness. And classification, right? classification में देखो, so some drugs which are known as inhalational agent. Some drugs are known as inhalational agent. So inhalational agent means they are given by inhalation route. आपको मास्क वगैरह लगा के या फिर स्पेशल एपरेटस लगा के they are given by inhalation route. So inhalational anesthetic, first class. So in that also you have two subclasses. Inhalational में भी दो subclass आता है. पहला है gaseous. तो these are the gases. गैसेस में आता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज अ लाफिंग गैस. क्वेश्चन आ चुका है. नाइट्रस ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज अ लाफिंग गैस. क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. देन एंटोनॉक्स इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. एंटोनॉक्स इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, ये अपन डिटेल में देखेंगे बाद में. देन xenon इज आल्सो गैस. So these are the gaseous general anesthetics. Then liquid general anesthetics. Liquid में क्या है? These are the liquid at a room temperature. These are the gases at room temperature. So liquid at a room temperature कौन है? क्लोरोफॉर्म. आपने देखा होगा बॉलीवुड मूवीज में, है ना, किसी हीरोइन को किडनैप करना है ना, विलन को किसी हीरोइन को किडनैप करना है. पुराने पिक्चर देखो आप, पिक्चरें नहीं देख रही आप, पिक्चरें देखना इंपॉर्टेंट है. तो पिक्चरों से भी सीखने मिलता है बहुत कुछ. तो देखो पुराने बॉलीवुड मूवी में क्या होता था कि मतलब विलन है और वो हीरोइन जो है, तो हीरो को कब्जे में करने के लिए, हीरो को अपने काबू में लाने के लिए वो हीरोइन को उठाते थे. तो हीरोइन को जाके किडनैप करते थे. कैसे करते थे? रुमाल लेते थे, उसके ऊपर क्लोरोफॉर्म डालते थे और उसको सुंघाते थे, नाक के ऊपर लाते थे, है ना. सुंघाने के बाद हीरोइन अनकॉन्शियस
और हीरोइन को गायब कर दिया. So chloroform is a inhalational liquid general anesthetic. So chloroform is there, trilene is there, then cyclopropane is there, trilene is there, cyclopropane is there, then ether is there, है ना. ether मतलब डाइथर ether, then halothane. Halothane is nothing but the halogenated hydrocarbons. Halothane, N-fluorine, isoflurane, desflurane, sevoflurane, methoxyflurane. So all these are the halogenated hydrocarbons. ये जो है यहाँ से these are the halogenated hydrocarbon, है ना. halogenated hydrocarbon मतलब इसमें क्लोरीन फ्लोरीन है और हाइड्रोकार्बन है, halogenated hydrocarbon. Chloroform, trilene, cyclopropane, ether, and these are halothane, N-fluorine, isoflurane, desflurane, sevoflurane, methoxyflurane. These are the liquid inhalation general anesthetics, right? So general anesthetics, they are classified into two types. So inhalational general anesthetics and then intravenous agents. Inhalational general anesthetics and intravenous agent. ठीक है, पहले inhalational general anesthetic अपन ने देख लिया. सेकंड है आपका इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट. इंट्रावेनस मतलब दे आर गिवन बाय इंट्रावेनस रूट, दे आर गिवन बाय इंट्रावेनस रूट. फॉर द इनहेलेशन एनेस्थेटिक यू नीड अ सर्टन स्पेशल एपरेटस. इसके लिए स्पेशल एपरेटस लगता है. आई विल शो यू. फॉर इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक यू नीड अ स्पेशल एपरेटस. वी आर गोइंग टू सी इंडिविजुअल ड्रग, डोंट वरी. तो इंट्रावेनस एजेंट में दो टाइप आता है. So first one is known as an inducing agent, or they are the short acting general anesthetic. They are the short acting general anesthetic. So they are known as a inducing agent. So they are used for the induction of general anesthesia, and slower acting drugs they are used for the maintenance. So inducing agent और ये क्या है, maintenance. So to maintain a general anesthesia you need a slower acting drug. To induce a general anesthesia आपको initially induce करना है तो induction agent. In that you have thiobarbituric acid derivative, जैसे thiopentone है ना, methoxytone है, then propofol है, etomidate है, and ketamine. ketamine is a opioidal analgesic. ठीक है, so these are the inducing agent. Inducing agent मतलब क्या, they are the short acting drugs, they are the short and rapid acting, है ना. इंड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, दे आर द शॉर्ट एंड रैपिड एक्टिंग, दे आर यूज्ड फॉर द इंडक्शन ऑफ इंड्यूसिंग एजेंट मीन्स दे आर द शॉर्ट एंड रैपिड एक्टिंग ड्रग्स. दे आर यूज्ड फॉर द इंडक्शन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, नॉट फॉर मेंटेनेंस, एंड मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया इज डन बाय दिस स्लोअर एक्टिंग ड्रग. So thiopentone is a thiobarbiturate, methoxytone is there, then propofol is there, then etomidate is there, and ketamine. So they are known as the inducing agents. Second one is the slower acting drugs or maintenance drugs. Slower acting drugs or maintenance drugs. So in this, here you have three classes: benzodiazepine derivative. इसमें आता है आपका diazepam, lorazepam, and midazolam. So nowadays midazolam is used. Diazepam, lorazepam, midazolam, right? Slower acting drug, they are used for the maintenance of general anesthesia. मतलब एक बार anesthesia चढ़ गया तो उसके बाद मेंटेन कैसे करना है, इन ड्रग से करना है. So intravenous agents में inducing and slower acting. Benzodiazepines में diazepam, lorazepam, midazolam, and then opioidal drugs, opioid analgesics. Opioid analgesic में आता है आपका fentanyl, then ramifentanil, sufentanil, and alfentanil. आपको क्लासिफिकेशन याद रखना है, क्वेश्चन आता है. So slower acting, so they can ask you which kind of drug are used for the maintenance of general anesthesia, or what kind of drug are used for the induction of general anesthesia. इंड्यूसिंग एजेंट याद रखना है thiopentone, methoxytone,
propofol, etomidate, ketamine. And for maintenance, benzodiazepines like diazepam, lorazepam, midazolam, opioid drug like fentanyl, remifentanil, then supentanyl, alfentanyl. Then neuroleptic agent, neuroleptic मतलब एंटीसाइकोटिक होता है, न्यूरोलेप्टिक एजेंट ड्रोपरिडोल है ना. तो ड्रोपरिडोल एंड दिस फेंटानिल, ये जो है sorry, droperidol plus fentanyl, they are combined together. Droperidol, which is a neuroleptic drug, and fentanyl क्या है, it is a opioidal analgesic. देखो ये दोनों ड्रग क्या है, कंबाइन किए जाते हैं. तो ओपोइडल नोन एज है ना, ये दोनों ड्रोपेरिडोल एंड फेंटानिल. Droperidol and fentanyl, neuroleptic. Droperidol neuroleptic and fentanyl opioidal drug. They are combined together to form a neuroleptic को बोलते हैं neuroleptic analgesia. अपन देखेंगे ये बात. Again you can see the classification of general anesthetics. Again general anesthetics, you can see over here classification. So inhalational general anesthetics, inhalational में आता है gaseous like nitrous oxide and other xenon वगैरह, volatile liquids ether, halothane, isoflurane, desflurane, sevoflurane. Then inhalation मतलब ये. Then intravenous anesthetics, उसमें आता है for induction fast acting drug और rapid acting drug, and for maintenance slower acting drug. For maintenance slower acting drug. फास्ट एक्टिंग में आता है थायोपेंटोन सोडियम, मिथोएक्सिटोन, प्रोपोफॉल, इटोमिडेट एंड है ना, इटोमिडेट. चलो स्लोअर एक्टिंग में आता है बेंजोडाइजेपिन्स में मेडाजोलम, लोराजेपाम एंड डायजेपाम. ओपोइडल एनाल्जेसिक में आता है फेंटानिल, सुपेंटानिल, अल्फेंटानिल वगैरह. एंड डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक एजेंट है केटामाइन. अलग अलग बुक में अलग अलग क्लासिफिकेशन है. Different books have mentioned different classes and I am covering all the classification, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है आपको, इसलिए क्लासिफिकेशन के ऊपर अपन बहुत सारा क्लासिफिकेशन लेते हैं. मतलब 2-4 बुक में से क्लासिफिकेशन उठा के यहाँ पे मैं आपको पढ़ रहा हूँ. ठीक है, राइट. नाउ फॉर इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स, जो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स है, दिस इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स दे आर एडमिनिस्टर्ड बाय दिस apparatus. This is the apparatus used in the hospitals to introduce a anesthetic agent, है ना. यहाँ पे ये ऐसा apparatus होता है, इसके एक मास्क भी होता है, मास्क लगा के पेशेंट को यहाँ से रेगुलेट करते हैं. ठीक है. तो gaseous and volatile liquids are administered by special apparatus known as, है ना, special apparatus. This is apparatus, right? Now again you can see the inhalational general anesthetics classification. Volatile liquids कौन सा है? Volatile liquids क्लोरोफॉर्म, डाइथाइल ईथर, इथाइल क्लोराइड, ट्राइक्लोरोइथिलीन, हेलोथेन, एन-फ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, सावोफ्लुरेन. गैसियस जनरल एनेस्थेटिक लाइक साइक्लोप्रोपेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, साइक्लोप्रोपेन, है ना. नॉन वोलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक्स और आल्सो नोन एज इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स. इन दैट अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स लाइक अ थायोपेंटॉल, सोडियम एक्सिडा, थायोपेंटॉल, सोडियम मिथोएक्सिटॉल. नॉन बार्बिट्रेट्स में आता है बेंजोडाइजेपिन में मिडाजोलम. ठीक है, फेनसाइक्लिडिन डेरिवेटिव, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. मतलब ये जो है एज इट इज क्वेश्चन आ चुका है. केटामाइन इज अ फेनसाइक्लिडिन डेरिवेटिव इज केटामाइन. देन स्टेरॉइडल ड्रग इज अ प्रेग्नेनोलोन इज अ स्टेरॉइडल जनरल एनेस्थेटिक. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. प्रेग्नेनोलोन इज अ स्टेरॉइडल जनरल एनेस्थेटिक. अदर में आता है इटोमिडेट, प्रोपोफॉल. तो मैंने यहाँ पे आपको तीन टाइप के क्लासिफिकेशन ले लिए. तीनों क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है.
राइट, तीनों क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज है, सो दोज आर नोन एज सीन एज डिप्रेशन ड्रग, drugs which are known as seen as depressant drug, they will decrease the activity of CNS known as a CNS depressant drug. तो मोस्टली इसमें आता है benzodiazepines, barbiturates and other, है ना। Now those drug which depresses the CNS, drug which depresses the CNS, central nervous system, drug which depresses the CNS, CNS को जो डिप्रेस करने वाले ड्रग है उसको क्या बोलते हैं अपन, CNS डिप्रेसेंट। तो ए CNS डिप्रेसेंट ड्रग, इट मे बी, इट सेम ड्रग में बी ए सेडेटिव, सेम ड्रग में बी ए एंजियोलाइटिक, सेम ड्रग में बी ए एंटी कन्वर्जन, सेम ड्रग में बी ए मसल रिलैक्सेंट, सेम ड्रग विल बी ए हिप्नोटिक, सेम ड्रग विल बी ए एनेस्थेटिक। ठीक है, तो देखो वन बाय वन टर्म समझ लो, वन बाय वन टर्म समझ लो, डिपेंडिंग अपॉन द डोज, डिपेंडिंग अपॉन द डोज, है ना। जैसे इफ यू प्लॉट ए डोज ऑन ए एक्स एक्सिस, इफ यू प्लॉट ए डोज ऑन ए एक्स एक्सिस and if you analyze the effect, that is a CNS effect on a y axis, if you plot a dose of CNS depressant drug and versus CNS effect, so you will get different effect। जैसे पहले एग्जांपल ले लो आप, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं डाइजिपम एंड एक एग्जांपल लेते हैं फिनोबार्बिटॉन। तो डाइजिपम इन अ स्मॉल डोज, डाइजिपम इन अ स्मॉल डोज, diazepam in a small dose will act as a sedative and anxiolytic. Diazepam in a small dose will act as a sedative and anxiolytic. Anxiolytic मतलब क्या है? Anxiolytic means these are the drug which will decrease your anxiety, your apprehension or your tension, है ना। आपको अगर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस लग रहा है, एंजाइटी लग रहा है, टेंशन आ रहा है थोड़ा सा, तो दैट विल बी रिलीव्ड बाय एंजियोलाइटिक ड्रग। So anxiolytic drugs are the drug which decreases your anxiety or apprehension or tension, है ना। sedative drug मतलब क्या, sedative drug मतलब these are the drug which will calm your nerve, आपके जो एक्साइटेशन हो चुका है नर्व का, तो एक्साइटेबल जो एक्साइटेशन नर्व का हो चुका है वो सप्रेस होगा। तो these are the drug which decreases the excitation of nerve, so suppresses the excitation of nerve, they will calm the nerve. So anxiolytic means that will decrease your anxiety, sedative मतलब drug which will calm your nerve, है ना। फिनोबार्बिटॉन और डाइजिपम, फिनोबार्बिटॉन क्या है, बार्बिटूरिक एसिड डेरिवेटिव है, और डाइजिपम क्या है, बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव। फिनोबार्बिटॉन और डाइजिपम in a smaller doses will act as a anxiolytic sedative, right? So if you increase the dose, it will act as a anti-convergent, है ना। in anti-convergent dose only it will act as a skeletal muscle relaxant, तो ये मसल रिलैक्सेंट भी एक्ट होंगी, है ना। in a small dose, same drug diazepam in a smaller dose will act as an anxiolytic, will act as a sedative. So if you increase dose, it will act as an anti-convergent, it will act as a muscle relaxant. Still, if you increase the dose, same drug will act as a hypnotic, hypnotic मतलब क्या है, drug which induces the sleep, known as a hypnotic. Same drug in a higher doses will act as a anesthetic, है ना। So it is a comparison between barbiturates and benzodiazepine. तो बार्बिचुरेट का ग्राफ देखो, बार्बिचुरेट का ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, मींस इट हैज अ स्ट्रेट कर्व, सो व्हिच इज अ, है ना, इट हैज अ स्ट्रेट कर्व, मतलब स्मॉलर चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन और स्मॉलर चेंज इन द डोज ऑफ बार्बिचुरेट कैन कॉज डिफरेंट एक्शन, है ना। मतलब सेडेशन से डायरेक्टली हैप्पीनेस, एनेस्थेसिया, मेडुलरी सप्रेशन, कोमा एंड डेथ, है ना। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में कोमा के बाद में आता है डेथ, मतलब ये डी फॉर डेथ, है ना। तो बेंजोडाइजेपिन हैज अ स्टीप कर्व,
बेंजोडाइजेपिन्स आर मोर सेफर देन बार्बिटरेट्स। यहाँ पे बेंजोडाइजेपिन्स दे आर मोर सेफ देन barbiturates. So CNS effect associated with the increasing dose of sedative hypnotics, right? आप गायब हो गए यहाँ से, है ना? If you are not able to attend the lecture for 2 hours, 3 hours, then don't think about the GPAT. GPAT का माइंड में छोड़ दो। अगर 2 hours 3 hours लेक्चर नहीं कर सकते तो क्या यूज है ना? तो वी हैव सीन द क्लासिफिकेशन। अभी यहाँ पे मेंबर्स 3 ही रह गए, 3 को ही पढ़ाना है क्या? मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, बट अगर आप लेक्चर में नहीं हो तो आपको समझ में कैसे आएगा? तो यू हैव टू अटेंड द लेक्चर, इट्स नॉट इजी, है ना? मैं यहाँ पे पूरा सिलेबस आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है, फिर भी मैं खुद पढ़ के पढ़ा रहा हूँ। किसके लिए पढ़ रहा हूँ, समझना चाहिए आपको। रिमेनिंग पार्ट विल सी द टुमारो। आपको जरूरत नहीं तो मुझे क्या है, सिलेबस कंप्लीट करना है। एक तो वो एक इशू है, आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो लेक्चर, वो एक इशू है ना? आज मेरा तो मन था कि आज के आज जनरल एनेस्थेटिक खत्म करना है, तो मॉर्निंग में इंटरनेट का इशू हो गया, इंटरनेट नहीं चल रहा था। सो इफ यू आर रेडी वी कैन कंडक्ट अ सेशन एट 8 PM। अगर आप रेडी हो तो 8 बजे भी लेंगे, चलो।